Am I audible, sir? Yes, you are audible. Sir, good Rich. morning, sir. Remaining panelists, I would request if you can be online. Dr. Avinash is not here with us. Dr. Sunil, Advocate Sunil, uh, Dr. Renuka, Yes, sir. Good Dr. morning, sir. Kusum Lata, Dr. Snehal Lata, and Ms. Ritika Sahu. Well, these are some of the authors of the paper, the book which we are, coming up. Let me begin with the introduction of today's session. So, as you are all aware, we are celebrating Dr. Ambedkar's Jayanti, and this is the 135th birth anniversary of Dr. Babasaheb Ambedkar. Objective of today's session basically is to discuss the theme about the contribution of Dr. Ambedkar, other than what he has written in Constitution. He was a great economist. He has talked about public finance. He has talked about economic policy planning. So this dimension of Dr. Ambedkar's personality has remained a bit unexplored, I would say, in a sense that we have focused a lot on the constitutional part. But the dimension of economic understanding of the things is completely, I must say, is overlooked because you find very less literature in these areas. Probably his original writings, which he has written in the area of public finance, features. As far as Dr. Ambedkar's life is concerned, he has been a great scholar, we all know, and a great economist. He studied in different places, including US, in Columbia University, and then in London. He studied in London School of Economics. His two works, that is LLM dissertation as well as his PhD work, is greatly acclaimed in their respective area. And particularly if we look at the Dr. Ambedkar's writings in volume 6, his writings are featuring, wherein he has very, very beautifully, collated the travel of the commerce in India, how it has evolved from the Vedic age, from till the Britishers. And that is a treat to read. So to all the, people who are attending today's session, I am sure you are going to enjoy the discussion which we are going to have today. So this discussion is also part of a project on a book which we are coming up from the Dr. Babasaheb Ambedkar Chair at SRM University on economic justice and public finance for social change and appraisal in the light of Dr. Ambedkar's vision. So today's panelists are the authors of some of the chapters who they have, kindly agreed to, consented to write for this particular book. We have already received some of the chapters, some of the authors. We have reached out to come up with some aspects which is left out, which we could not get the paper. We have requested some authors. One of them I could see here, Mr. Navneet Sharma. I have asked him to write something in the area of monopolies, because competition law and monopolies he has addressed in one of his writings when he is talking about East India's companies' monopolies and how that has shaped up some part of the public finance or imperial versus federalism. One of the, thesis which I was looking at it, one of our authors, Advocate Ravi Prakash, is touching upon that aspect, that is federalism. So let me briefly give you a background of our authors. In fact, I would request our authors who are present for the panel discussion today to briefly, tell about themselves. But I'll just, tell you briefly about them. So we have Dr. Avinash Fuljale. He is one of the authors, but not present today. He will be talking about Ambedkarite Satyagraha for the landless in Punjab and land reforms. So land reforms has also been a very big area in which Dr. Ambedkar has written. And his idea was that, if you have a lot of fragmentation of land, then probably that is not going in a long way. And landless should be provided with some, land, and that is what his basic idea was. And then he has written enormously in this area. Probably this chapter will cover that. Then we are having Dr. Ravi Prakash, who is advocate on record. He has also studied in, if I'm not wrong, in Columbia, and he has done his LLM from ILI.
and an HNLU graduate. He basically will be talking about principles governing fiscal federalism and powers of borrowing under Constitution of India. And there has been a very interesting, write-up by Dr. Ambedkar in this area, wherein he compares the federal system as well. So it will be an interesting talk. And then we are having Kusum Lata, Dr. Kusum Lata. She will be talking about economic democracy and social change, the relevance of Dr. Ambedkar's ideas today. And Dr. Snehlata has written a chapter on Beyond Tokenism, Women Economic Rights. And Dr. Ambedkar very well said about the women rights that the growth of the country can only be measured by the progress the woman has made in that country, particularly now since we have women reservation bill, probably the latest. So objective of this book would be to trace the thoughts of Dr. Ambedkar and see it in the contemporary lens, that what presently those thoughts mean for the administration of the country, and how this area would be working. Then there is a co-authored chapter by Advocate Sunil, Kalagi, Ms. Ritika Sahu, and Ms. Renuka on Dr. Ambedkar's vision of modern India and world social justice in the era of globalization. So these are some of the themes. Now I would request our respective authors to provide a brief comment about their work and the paper which they are talking about. If we can limit it to some shorter duration, maybe 2-3 minutes, and then thereafter we will go ahead with exploring some of these questions during the panel discussion. So let us begin this particular discussion with, if I may request Advocate Ravi Prakash to begin with the talk. Yeah. Good morning, sir. Good morning, panels, members of the panel, and I'm really grateful for the opportunity and particularly to contribute towards the subject matter, which is so close to the Dr. Ambedkar, and we are celebrating his 135th birth anniversary today. So the topic of my discussion is, and the research is, principles governing fiscal federalism and power of borrowings under Constitution of India. To begin with, this is one of the subject matter which is pending before the for adjudication before the Supreme Court of India. As we know that the India at the time of adoption of the Constitution had all the experience of the world, and particularly the experience of Dr. Ambedkar as international student or international scholar of the law, or his statesmanship particularly, where he incorporated the best practices of the constitutional governance and the principles of constitutionalism from different corner of the world and suitably modified it to suit the need of the India. So when we analyze the principles of fiscal federalism, particularly the principles which are the part of from Article 246 onwards to 300 of the Constitution, Articles 246 to 300. Article 246 begins with the legislative demarcations between the center and state, and then it went on to executive relationship between the center and state, and then the core fiscal principles or the articles begins with Article 260. So how the taxations will be done between the center and state, what are the roles of the finance commissions, how its recommendations will be implemented. Then coming to the taxations of the state property in center's jurisdiction, or the state's property under the state central property, taxation of the center's property under the state's jurisdiction. In what all cases or circumstances there will be an exemption from blanket exemption from the center's taxation of the properties of the state and the center respectively, vice versa.
Then coming to those principles of borrowings and how it will be the public finance aspects, what will be the role and functions of the public accounts committee and the public accounts fund of the center and respectively states, to what extent they can borrow under Article 293 of the Constitution of India. Then how that delicate balance of the economic equilibrium will be balanced between the states and the center, so that the national security, I am imposing an emphasis on national security, and the integrity of particularly the nation state, India as a nation state, remains intact with the respect for federal principles as well. In my research paper, I have, and it's nothing is happening in the Constitution of India in isolation or for the first time. I am tracing in my chapter, particularly research, I am tracing back the development of these fiscal aspects, particularly the fiscal relationship between the center and state, or the federal units and the center, from the US Constitution and the US constitutional experiences. For the first time, if I recollect correctly, in 1819, the US Supreme Court faced with a issue of taxing of a state bank by the central government, where the central government, state wanted to establish a bank through the charter, and the case name is McCullough versus Maryland. It's a very famous case written by Justice John Marshall. And then the second bank charter case, that is Osborne versus Bank of United States, 1824, whether the states will be charging the bank established by the federal unit in the United States experience, because the central government at that point of time in United States, particularly the federal government, said that we need to control the purse and generate finance. And for that finance, generating that finance, we need to have our own bank. We should not be dependent on the state's bank. And their central and the bank as a subject matter exclusively fell into a state's list under the United States Constitution. So the states particularly challenged the very power of federal government in United States to create the bank as a commercial entity. So the particularly the United States Supreme Court faced with a very difficult position, because it realized that the Constitution of United States is nothing but a geostrategic document. We need to fund war, we need to finance the central government or the federal government in United States, and for that we need a commercial control or the control over finance. And under the Constitution, a scheme of the Constitution of United States, this is clearly not written, because it exclusively fall into the subject matter and the domain of states. So the beauty lies in the interpretations which has been given by Justice John Marshall, and he took their interpretation to a new level in this case, particularly McCullough versus Maryland, and justified the charter of the establishment of the bank by the federal government. Subsequently, the states were resisting, because that was one of the more major source of income, and which went from the state to federal government in United States, and the political tussle between the state and the federal unit continued. So when we see and analyze the Article 286 and 287 of the Indian Constitution, which exempts the taxation of certain property of the center in a state's jurisdiction, and taxation of certain state's property in central jurisdiction. These are the principles which have been culminated and established, tested, proven in United States and incorporated in express words by the drafters of the Constitution of India.
because they knew that the federal units, the experience has revealed, and it has been over a period of more than 100 years, it has been tested that how this aspect of fiscal federalism should be governed between the federal units and states, and particularly center. So, and in between there is a long history which I will be examining, because in 1832 the president's bank veto speech, which is the speech by United States President Andrew Jackson, where we fondly remember Roosevelt's speech as a law student, where he talked about the packing of the courts. But it's a 1832 speech of Andrew Jackson, who also threatened that if the courts are not going to decide in our favor, and particularly uh, uh, the states are not going to exempt it from taxation, we will be packing up the entire the federal principles will be at collapse. And remember, this is at 1832, it was the same period when the Britishers abolished slavery worldwide in its colonies. So, and America was resisting. So, how the banks fed, particularly because you need to control slavery, and to have slaves, you need to have finance. How the states were resisting the slavery, particularly the practice of slavery in the United States in 1833, whereas particularly the liberals in the United States were asking for to abolish the slavery on global pattern, because the United Kingdom, UK, was abolishing all the slavery in its colonies. So these are the theme which I am trying to explore in my chapter, the historical narratives, that how the federal finance is a key to the economic, social and economic justice, not only from the between the center and the state, rather than the population gets impacted. Now coming to the experience of India particularly, and my core findings on article in principles which has been incorporated in fiscal, particularly from article 280 to 297, uh, governing the center states relationships and the power of taxation, particularly between the center and state, the borrowings aspect, with an emphasis on article 293. Coming the initially the independent India did not see any tussle between the center and the state. It was the center which was controlling the entire economic policy. We know the Nehruvian era, where the our first Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru, led the economic foundations, particularly the new era of development, a state-controlled development. And then in uh, 70s and 80s, late 70s and 80s, we saw the collapse of those economies, particularly the state, all those state economies and the state controlled entities run into the insolvency, and they were on the particularly uh, near the verge of collapse. So we saw the development of new legislation like coming up of SICA Act, and the debt structuring finance of the particularly these companies, and how the finance has been restructured. Then at the beginning of 1990s, we saw the principle or the global market, Indian market opening to the globe, the principles of new economic era, and a new set of laws which we have experienced, particularly starting with the RDDB and FI Act, recovery of debt recovery acts, and everything. So the and I am also involved into one of the litigation from the state of Kerala, where in 1990s, early 1990s, the central government said that we don't have funds to even distribute it to the center, to the states, and the states have to generate. States have to states delegations or the ministries can go and coordinate with the international funding agencies and the international
through the state corporations or through its invoking its borrowing power, and can fund the socio-economic development aspects. And the state of Kerala particularly went to the Canada and entered into an MOU for the development of hydroelectricity project, which were established by or which were built by Britishers in pre-independent era. They wanted to renovate that hydroelectricity project for its optimum utilization and optimum generation of the electricity. And we know the electricity importance of electricity in our day-to-day life. So state of Kerala wanted money and funds badly. They went on to state of Canada, and Canada, in fact, through its agencies, funded it, and the central government very easily gave all the clearance. And because it was not having that much of fund and capacity to fund the state's project particularly. So but that led to the late 90s and early 2000 practices of a state, and where states were given a free hand by central government, respective central government, because that period also saw the coalition government. Was an instability of the economic policies and the governance particularly. So during that period, the states got a free hand, and the states were seeking and raising the funds from the external entities or the international organizations. And the debt, the fiscal deficits, particularly as reflected in their budget and particularly the balance sheet, got in a very doldrum situation. The financial aspects and the management were in a very difficult situation. Then coming to the 2003 Act, where the Vajpayee government came up with a act of FRBM Act, Responsibility Budget Management Act. Budget Management Act, and that the objective of that act is to be a responsible to manage the fiscal finance of the state and center through a governing principles. It's a very short act. It outlines the principles, how the center and the center will be devolving the funds to the state, whether the state can borrow from the only center through RBI, or a state can go, and to what extent a state can go to the international agencies or international organizations and come back and raise the debt or raise the finance. Now coming to the interpretation of that FRBM Act, the state of Kerala. Ravi, Advocate Ravi. So we would like to hear you. Maybe we can take up some other panelists also along with you, because we wanted to have it a panel discussion. Yes, sir. So some of your aspects, just hold on, because I'll come back to you again, because you are talking that in greater detail. So let us have an introduction and a brief input from panelists as well, and then we move on with your detailed analysis of what you have done. Will it be fine? Yes, sir. Advocate Ravi? Yes, sir. Yeah, perfectly all right. Thanks a lot. Now, what Advocate Ravi has been telling is a very, very important dimension and practical aspect of how the finances are dealt with between center and state, and its constitutional interpretation through cases. Probably it is going to be a very, very interesting chapter. Now, here I would like to also, state, because we are discussing Dr. Ambedkar's philosophy and Dr. Ambedkar's ideas. We remember Professor Amartya Sen, one of the greatest economists, saying that Ambedkar is my father in economics, and that is what was his impact, and his true celebrated champion of the underprivileged, and he deserves more than what he had achieved today. His contribution in the field of economics is marvelous and will be remembered forever. So this is what a Nobel laureate had to say about Dr. Ambedkar. One thing which is very, very important or focused, which we should look at, is Dr. Ambedkar has been taught by teachers, or he got mentors at that point in time who were renowned, philosophers, renowned economists. To name a few, the first, if you see when he was studying in Columbia in the US and at the University of London, he had
come under the influence of outstanding American philosopher at that particular time, John Dewey, and who was among Ambedkar's teachers at Columbia University. And he also got an opportunity to study public finance from Edwin R.A. Seligman. And when I see Dr. Ambedkar's subjects, which he read about, majority of the subjects were in economics and political area, which he studied. One of his another teachers in London was, eminent economist Edwin Kahneman, and this is these background and these studies definitely reflect in the thought which Dr. Ambedkar brought. Now, let me introduce our, second panelist today, Dr. Snehlata, and she is an teacher and educator who is presently head of the Department of Political Science at Government College, Rithoj, Gurugram, and she has done her, PhD in the area of political science and a gold medalist in both her graduation and post-graduation. Has written a number of papers. So over to you, Dr. Snehlata. So to briefly, if you want to supplement something in your introduction, and then briefly about your work which you are trying to portray in this particular book. Over to you. Thank you, sir. आज हम उस महान व्यक्तित्व को याद कर रहे हैं जिन्होंने न केवल हमें संविधान दिया बल्कि सोचने, समझने और लड़ने का साहस भी दिया। Distinguished chair, esteemed fellow guest, panelist, और यहाँ उपस्थित समकालीन विचारधारा के समस्त प्रतिनिधियों को मेरा सादर नमस्कार। कहते हैं कि एक प्रबुद्ध समाज हम तभी बन सकते हैं जब जो महिलाएं हैं वो केवल घर की ही नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था की रीढ़ बने। इसलिए आज मेरा जो टॉपिक है वो महिलाओं से रिलेटेड ही है। मेरा जो टॉपिक है वो है बियॉन्ड टोकनिज्म, विमेन्स इकोनॉमिक राइट्स इन अम्बेडकराइट फ्रेमवर्क, यानी सांकेतिकता से आगे अम्बेडकरवादी दृष्टिकोण से महिलाओं के आर्थिक अधिकारों को समझने का प्रयास। अब आप सोच रहे होंगे कि विमेन एम्पावरमेंट तो दशकों से एक बज़वर्ड बना रहा है और इसके लिए हजारों पॉलिसीज लाई गई हैं। आपको गिनती में भी महिलाओं की संख्या बढ़ती दिखाई दे रही होगी। फिर ऐसा क्या कारण है कि मैं अंबेडकर जयंती जैसे इस अवसर पर महिलाओं के मुद्दे को उठा रही हूँ? इसके पीछे कारण है क्योंकि जब भी हम महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं तो हम उनकी उपस्थिति को मात्र स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन तक सीमित कर देते हैं। हमने बोर्ड में एक महिला को रख दिया तो हम मान लेते हैं कि हम इंक्लूसिव हो चुके हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तो मेरा जो टॉपिक है वो बेसिकली यही प्रयास करता है कि हम ना केवल सांकेतिक योजनाओं पर चर्चा करें बल्कि हम ये भी समझने का प्रयास करें कि जो महिलाएं हैं उनकी आर्थिक भागीदारी सीमित क्यों है और हम कैसे उसे ट्रांसफॉर्मेटिव बना सकते हैं, कैसे हम परिवर्तनकारी बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि हम भारत में महिलाओं की स्थिति को लेके जो आंकड़े हैं उन पे एक नजर डालें। तो जब हम नजर डालते हैं तो हमें एक चिंताजनक स्थिति हमारे सामने आती है और उसमें पता चलता है, जैसे कि आप पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो 2023 के हैं उनका डाटा उठाएं तो आपको पता चलेगा कि श्रम बल में जो पुरुषों की भागीदारी है वो 77% है, लेकिन फीमेल्स का उसमें पार्टिसिपेशन मात्र 24% है। हालांकि ये अब बढ़ के बोल रहे हैं कि 40 के अबव आ चुका है, लेकिन फिर भी हम इसको सेटिस्फैक्टरी नहीं कह सकते। तो इसका अर्थ क्या है इन आंकड़ों का? क्या महिलाएं काम नहीं करना चाहती? ऐसा बिल्कुल नहीं है। महिलाएं बिल्कुल काम करना चाहती हैं पर उन्हें अवसर नहीं मिलते। और अवसर क्यों नहीं मिलते? अवसर इसलिए नहीं मिलते क्योंकि सामाजिक ढांचा कुछ इस प्रकार से डिजाइन किया गया है। घरेलू जो जिम्मेदारियां हैं उनका बोझ महिलाओं पे ज्यादा है। वो इसलिए क्योंकि असमान वेतन की प्रथाएं हैं और आर्थिक जो संसाधन है उन तक महिलाओं की पहुंच अभी भी सीमित है। आप देखेंगे कि अगर लैंड ओनरशिप के लिए कोई महिला ट्राई करे तो उसको सीरियसली काउंट नहीं किया जाता। सपोज करिए अगर मैं अपना ही उदाहरण लूं,
आज मैं टीचिंग में हूँ, मैं एक अच्छी सैलरी कमाती हूँ, लेकिन अगर मैं एक प्रॉपर्टी डील करने की कोशिश करूं तो लोग मुझे सीरियसली ही नहीं लेंगे। उससे पहले वो बोलेंगे जाइए आपके फादर से बात कर लेंगे, आपके भाई से बात कर लेंगे, यानी उसको किसी ना किसी मेल के सपोर्ट की जरूरत है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। तो यहाँ पे एक जो सोच जो है वो गहरी सोच का विषय ये है कि महिलाएं जो हैं वो शिक्षा तो प्राप्त कर रही हैं, पर उनकी जो शिक्षा है वो उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता नहीं दिला पा रही है। बहुत मामले में वो आज भी पीछे महसूस करती हैं। तो केंद्र और राज्य सरकारें जो हैं उन्होंने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, स्टैंड अप इंडिया योजना है, सुकन्या समृद्धि योजना है, या आर्थिक सुरक्षा देने के लिए जैसे सुभद्रा योजना है। तो ढेरों योजनाएं आपको मिल जाएंगी, लेकिन इन योजनाओं का उद्देश्य जो है वो है महिलाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराना, ऋण उपलब्ध कराना। लेकिन आप देखेंगे कि आपको लोन उपलब्धि के लिए योजनाएं तो बना दी, लेकिन बैंक लोन के लिए गारंटी मांगता है, लेकिन उसके पास कोलेटरल रखने के लिए शायद कुछ भी नहीं है। तो जब आप देखेंगे कि आंकड़े बोलते तो हैं कि स्टार्टअप में 2025 में इंडिया में 73,000 स्टार्टअप्स ऐसे हैं जिसमें कम से कम एक महिला डायरेक्टर है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि ये जो नीतियां हैं वो अक्सर फॉर्म भरने तक, डॉक्यूमेंटेशन तक और सिस्टम की दीवारों से टकराने तक सीमित हो जाती हैं। और आप देखेंगे कि जो पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं, खास करके जो दलित और आदिवासी महिलाएं हैं, उन तक तो इन नीतियों का लाभ पहुंच ही नहीं पाता। और आप देखेंगे कि नीतियां तो हैं पर उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। और यही वजह है कि जो अकाउंटेबिलिटी इनिशिएटिव है वो स्पष्ट तौर पे इंडिकेट करता है कि जो सरकार है उसने बहुत सारी योजनाएं शुरू की हैं, लेकिन इन योजनाओं का जो अधिकतर बजट है वो प्रचार प्रसार पे खत्म खर्च किया जाता है। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, तो इन्होंने इसको स्पष्ट तौर पे उल्लेखित किया है और बताया है कि इसका मैक्सिमम बजट केवल प्रचार प्रसार पे लगा है, इसका कोई जमीनी लाभ जो है वो महिलाओं को नहीं मिला है। इसी तरह से जेंडर बजटिंग की एक अच्छी शुरुआत 2005 में हुई थी कि फीमेल को फोकस करके कुछ पॉलिसीज बनाई जाए, उसमें बजट का एक स्पेसिफिक अमाउंट एलोकेट किया जाए। लेकिन आप जानते हैं सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि 2023 तक जेंडर के जो बजटिंग है वो केवल 4.3% बजट के हिस्से तक सीमित है, यानी 5% से भी कम। और ये क्या दिखाता है हमें? ये एक्चुअली ये स्पष्ट संकेत करता है कि जो संस्थाएं हैं या जो सरकारें हैं वो सांकेतिकता में उलझी हुई हैं, यानी उनको सिर्फ नाम के लिए तो बताना हमने ये पॉलिसी बना दी है या हमने इतना बजट एलोकेट कर दिया है, लेकिन नाम मात्र के लिए योजनाएं जोड़ी जा रही हैं, उसके पीछे कोई ऐसा खास स्ट्रक्चर तैयार नहीं किया जा रहा, कोई इरादा, कोई विल पावर नहीं दिखाई जा रही जो ग्राउंड लेवल पे चेंज ला सके। तो जो अंबेडकरवादी दृष्टिकोण है वो इससे एकदम अलग है। आपने देखा होगा कि जो अंबेडकर जी हैं वो महिलाओं के अधिकारों को लेकर एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण रखते थे। उन्होंने अपने टाइम में हिंदू कोड बिल जैसी व्यवस्था लाने की कोशिश की, क्योंकि उनको पता था कि जब तक आप इन अधिकारों को इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं कर देंगे, एक राइट के तौर पे नहीं दे देंगे, तब तक ये समाज बदलाव लाने वाला नहीं है। आप इस समाज में उसकी जो कुरीतियां हैं वो इतनी ज्यादा गहरी पकड़ बनाए हुए हैं कि उनको अधिकारों के तौर पे कानूनी कार्रवाई करके ही शायद कुछ हद तक उन पे विजय पाई जा सकती है। तो यहाँ और आप देखेंगे कि ये समाज इतना रूढ़िवादी था कि वो भी अपनी कोशिश में एक बार नाकामयाब हो गई। हालांकि आज क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है तो हमारे पास एक बार फिर से चांस है कि उस तरीके का जो प्रचार प्रसार अगर उस टाइम पे मिलता तो वो सक्सेसफुल हो सकते थे। तो आज की जो कमियां हैं हम उनको इनकी लिवरेज लेकर के ठीक कर सकते हैं। तो सवाल है कि जो जो हमारे अंबेडकर जी थे वो जो महिलाओं का विकास है उसको केवल शिक्षा तक सीमित नहीं रखना चाहते थे। उनको पता था कि अगर डेवलपमेंट करना है तो उसको केवल विधायिका, कार्यपालिका या न्यायपालिका तक सीमित नहीं कर देना, उसको राजनीतिक और उसको सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक मुद्दा भी बनाना है। तभी सिचुएशन जो है वो सुधार हो सकता है उसमें। और आप देखेंगे कि जो महिलाओं की स्थिति की जब बात करते हैं तो हम उसमें केवल महिलाओं की नहीं बल्कि आप महिलाओं के साथ जाति के इंटरसेक्शन की भी बात करते हैं, क्योंकि जो महिलाएं हैं उनके
केवल लैंगिक भेदभाव कह देना पर्याप्त नहीं है, ये भी स्वीकार करना होगा कि जो आदिवासी और दलित महिलाएं हैं वो दोहरा शोषण झेलती है, एक फीमेल होने के कारण और दूसरा अपनी जाति के कारण। और ऑक्सफैम इंडिया की 2023 की रिपोर्ट ये बताती है कि जो महिलाएं हैं, दलित महिलाएं, वो उच्च जाति की महिलाओं के कंपैरिजन में 40% कम वेतन प्राप्त करती हैं। और अगर मैं सिर्फ दलित महिलाओं की नहीं, सब तरीके की महिलाओं की बात करूं, तो वो पुरुषों के मुकाबले में 20 से 30% कम वेतन प्राप्त करती हैं। और ये सिचुएशन, ये सारे अधिकार दिए जाने के बाद है। तो ये जो लेबर पॉलिसीज हैं या हायरिंग प्रैक्टिसेस में जो जेंडर बायस शामिल है, इसको दूर करने की जरूरत है। हमें अम्बेडकरवादी सोच जो है उसके रास्ते पे चलने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर ये जो आंकड़े हमें दिखते हैं, जो आज भी बोलते हैं कि आज भी हमारी पार्लियामेंट में जो लोकसभा है उसमें 15% से कम फीमेल मेंबर्स हैं, या शीर्ष जो नेतृत्व के पद हैं वो मात्र 16% महिलाओं के द्वारा भरे गए हैं। या इसको भी छोड़ दें, वो महिलाएं इस पद तक पहुंची तो ठीक है, लेकिन जो नहीं पहुंच पा रही उसके पीछे बहुत बड़े कारण हैं, जैसे कि हर 16 मिनट में एक महिला रेप का शिकार होती है। तो हम कैसी सामाजिक व्यवस्था में फंसे हुए हैं, हम क्यों इतना सुधार नहीं ला पा रहे हैं? इस तरीके का जो अनइक्वल बिहेवियर है या फीमेल्स के सामने ये जो समस्याएं हैं वो उसको आगे बढ़ने से रोकती हैं। तो जो वित्तीय समावेशन की, हालांकि सरकार ने कई कोशिशें की हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री जन धन योजना चलाई गई, और ऐसा माना जाता है, जो आंकड़े बोलते हैं कि 78% महिलाएं जो हैं वो अब बैंक खाता रखती हैं। लेकिन जब आप आंकड़ों की छानबीन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनमें से मात्र 35% ऐसे अकाउंट हैं, जो अकाउंट एक्टिव हैं, जिनको वो महिलाएं मैनेज कर रही हैं। तो ये एक सिर्फ क्योंकि अकाउंट खुलवा के अपने काम की इतिश्री कर ली गई, या ये मान लिया गया कि फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया है, वो सही नहीं है। तो जो वित्तीय समावेशन है उसकी अपनी सीमाएं हैं, और सीमाएं क्या है? सबसे पहले वित्तीय साक्षरता की कमी है। दूसरा, निर्णय लेने में स्वायत्ता नहीं है। आज भी हो सकता है कि ये जो 35% एक्टिव अकाउंट्स है इनको भी उसके अदर फैमिली मेंबर्स ऑपरेट कर रहे हों। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो परिवार में महिलाएं हैं उसका आर्थिक निर्णयों में कोई कह सकते हैं कि कहना ही नहीं माना जाता, या एक तरीके से उसका कोई ओपिनियन मायने नहीं रखता है। तो जमीन पे ऐसा माना जाता है कि जिसका जमीन पे अधिकार है उसके पास ताकत है, और जमीन पे अधिकार का मतलब है कि घरेलू स्तर पे निर्णय लेने की क्षमता भी उसी के पास है। क्योंकि आप देखते हैं कि जिसके पास पे जमीन है लोग उसकी ज्यादा केयर करते हैं, इवन वृद्धावस्था में भी। लेकिन हमारे जो एग्रीकल्चरल सेंसस है 2022 की, वो ये मानती है कि मात्र 13% महिलाएं ऐसी हैं जिनके नाम पे कोई एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है। तो अब सवाल ये है कि हम क्या करें? जब आंकड़े ऐसे डरावने हैं तो क्या किया जा सकता है? तो हमें जरूरत है कि हम सांस्कृतिक और सामाजिक बदलाव लाने की कोशिश करें, जहां पे बेटी को सिर्फ शादी की जिम्मेदारी ना समझा जाए, बल्कि उसके सपनों को हेलो, या डॉक्टर स्नेहलता। हाँ जी। हाँ, यू कैन कंटिन्यू प्लीज, या फ्रीज हो गया था बीच में, या गो अहेड। ओके, एम आई ऑडिबल सर? यस यस यस, यू आर नाउ ऑडिबल, गो अहेड। ओके, तो मैं कह रही थी कि हम आखिर क्या कर सकते हैं इस सिचुएशन को सुधारने के लिए। तो हमें सबसे पहले जरूरत है कि हम सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव लाने की कोशिश करें। हम कोशिश करें कि महिलाओं को सिर्फ शादी की जिम्मेदारी ना समझा जाए, बल्कि उसके सपनों को, उसकी आर्थिक आजादी को परिवार की प्राथमिकता पे रखा जाए। और इसके लिए कुछ कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे कि कुछ एफर्मेटिव एक्शंस लिए जा सकते हैं। जैसे कि हमने महिलाओं को ऑलरेडी पंचायतों में आरक्षण दे दिया है, लेकिन उसके पीछे हमारे सामने आप देखोगे तो पंचायत जो पति वाली जो है सिचुएशन आती है। प्रधानपति।
हाँ जी, तो इसी तरीके से आप देखेंगे, लेकिन ये मतलब ये जो रिजर्वेशन है, आप देखेंगे जब नौकरियों की बात करते हैं तो ये केवल आपको फॉर्मल सेक्टर में देखने को मिलता है, जबकि 90% जो फीमेल्स हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर में एंगेज्ड हैं। तो मुझे लगता है कि इस एफर्मेटिव एक्शंस को इनफॉर्मल इकोनॉमी पे भी लागू करने का अगर प्रयास किया जाए तो महिलाओं की सिचुएशन में बेहतरी जल्दी आ सकती है। इसके अलावा वेतन की पारदर्शिता लाई जा सकती है, जो कंपनियां हैं उनको मजबूर किया जाए कि वो पुरुषों और महिलाओं को कितना वेतन देती हैं उसको सार्वजनिक तौर पे डिक्लेयर करें, ताकि पता चले कि वो महिलाओं के साथ कहीं वेतन देने में भेदभाव तो नहीं करते हैं। इसके अलावा आप देखते हैं कि जो भूमि पे जो ज्वाइंट ओनरशिप है, यानी पति और पत्नी के नाम पे ज्वाइंट रजिस्ट्री का कुछ ऐसा इनिशिएटिव चलाया जाए, ताकि महिलाओं की जो जमीनों तक उन पे अधिकार की जो पहुंच है वो थोड़ी सी बढ़ सके। और सबसे बड़ी बात, जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग को मजबूत करना होगा। इसको केवल ये इतिश्री करने के लिए 3 से 4% तक सीमित रखने की से कुछ नहीं होने वाला। तो मिनिमम कम से कम 10% तो जेंडर बजट को एलोकेट होना ही चाहिए। तो अंत में मैं आपको केवल यही कहूंगी कि अंबेडकर जी कहते थे कि समाज के उत्थान तब तक संभव नहीं है जब तक कि उसकी सबसे कमजोर इकाई को न्याय ना मिले। और अगर हम अपना उत्थान चाहते हैं तो ये जरूरी है कि हम महिलाओं को उनका सही स्थान दें, उनको उनका हक मिले। तो इसलिए मैं आपको अंत में केवल यही कहूंगी कि आइए अंबेडकर के सपनों का भारत बनाते हैं और टोकनिज्म से ट्रांसफॉर्मेशन का रास्ता अपनाते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर स्नेहलता, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से जो ये इशू है उसको कवर किया है। और आई एम श्योर आपके पेपर में आपने और डिटेल में इस चीज को मेंशन किया है। जो एडिटोरियल कमेंट्स हैं इस पेपर के ऊपर वो आपको हम और प्रोवाइड करेंगे आफ्टर इट गोज टू दैट पर्टिकुलर प्रोसेस। बट थैंक यू फॉर रेजिंग अ वेरी प्रोमिनेंट इशू। यस, मेनी अ टाइम्स इट अपीयर्स टू बी टोकनिज्म। बहुत बार ऐसा लगता है कि ये टोकनिज्म है, बट बहुत समाज के स्तर पे भी कार्य करने की आवश्यकता है। सिर्फ कानून से बदलाव आना बहुत मुश्किल है। अगर हम कानून बना भी दें और उसकी अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, अगर समाज नहीं सुधर रहा है, तो फिर इन कानूनों का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो ये बहुत ही चिकन एंड एग वाली सिचुएशन हो जाती है कि आप करें तो करें क्या और कैसे मूव करें इन चीजों को। बट मेरा ये मानना है कि जब हम ये डिस्कशंस करते हैं, जब यूथ हमारा इन्वॉल्व होता है इन चीजों में, तो फिर इसको हम टेक फॉरवर्ड करके सामाजिक बदलाव ला सकते हैं समय के अनुसार। अगर देखा जाए, जब डॉक्टर अंबेडकर ने ये थॉट दिया कि हमें इक्वालिटी लानी है, वुमेन को रिप्रेजेंटेशन देना है, वहां से आज तक हम लोगों ने बहुत कुछ ट्रैवल किया है, लेकिन जर्नी बहुत लंबी रहती है। जो कि एसडीजी के गोल्स में भी प्रतीत होता है कि अभी अगर हम जिस पेस से चल रहे हैं, अगर उस पेस से चलें तो और 150 साल लगेंगे वुमेन को इक्वालिटी देने के लिए। तो डेफिनेटली इट इज अ वेरी नाइस पर्सपेक्टिव विच यू हैव कवर्ड. नाउ वी विल मूव टू आवर co-panelists. There are three panelists who have authored a paper together: Advocate Sunil L. Kalagi, Miss Ritika Sahu, and Miss Renuka Gubbewad. So this is I would request them to be on the video. So they have authored a paper on economic democracy and social justice in the era of globalization, Dr. Ambedkar's vision of modern India and the world. Now, probably they are linked through Kalinga University, and I think Advocate Sunil is completing his LLM there, and he has been practicing in this particular area. He is also an engineer. Ms. Ritika Sahu is assistant professor at Kalinga University, and in criminal law areas she works. Ms. Renuka S. Gubbewad is from Department of Law, School of Legal Jurisprudence and Studies, Central University, Karnataka. And all these three of the authors have tried to pen a paper. I would request your brief comments. One of you can take the lead and broadly talk about this particular paper. Renuka, madam, I see your profile and find that you have worked in the area of labor laws. So Dr. Ambedkar's, vision on labor laws have also been very, very prominent. So if on this occasion, briefly for 1-2 minutes, if you can talk about that, it will be great. Great. For everyone whosoever is present here. So over to you, Advocate Sunil. I think you are the primary author. You can proceed with this. Yeah. Good morning, everyone, and thank you for accepting our chapter for your
book chapter which you have invited to contribute. And this is my first contribution for this type of Ambedkar's legacy. The moment we saw this, your brochure, when you have advertised to invitation for book chapter, we were very much privileged, and it really excited us to write about Ambedkar's contribution for modern India and to globalization. And I thank Gubbewad Madam and Ms. Ritika ji, who were willingly ready to contribute for this book chapter. And Ritika ji has contributed in our book chapter regarding caste inequalities, and Gubbewad Madam has contributed about the Ambedkar as a social reformer. And myself, I was very curious and excited to know more about Ambedkar ji, and I had gone through his thoughts through his books, like my autobiography written by Ambedkar ji, and Ambedkar's India from written by Dr. B.R. Ambedkar. And also, I was very curious and excited to read about the book authored by himself, The Pakistan or the Partition of India. So we all three together took the initiative to contribute this chapter in this variety of topics. So first of all, I want to highlight what I explored through these books is Ambedkar's always had a very great visionary after going through his books. What I found is the visionary, his mind is, he has already talked about the generational rights. He not only talked about the present scenario, he talked about the futuristic generational rights. He treated the future generations as an independent nation. That much visionary. It's very rare to see a personality having a thought for the future generations. And also he has talked about the truth. The truth, the religion is no higher than the truth. The truth always prevails. And he also give the more importance to the moral rights. As a personality, he has got a very good moral rights. After going through his books, in many things, he even denied for the second marriage. So that it creates an imbalance in his family. And he always sacrificed many things for the social work. And his nationalism part is also been described in M.L. Shahare's book. In his tales, where he went to the Raigad fort to see how Shivaji Maharaj has fought battle against the Mughals. So his nationalism was also highlighted in this book. So what I can see from my contribution, Ambedkar is really entitled for the Mahatma title. I can clearly say that he, as an individual personality, and his dedication towards social justice, not only for the political rights, he always endorsed for the social and economic rights. So his individual as a personality, his dedication towards the social justice, even he denied the title for Mahatma. He never wanted to show his superiority or as a godly figure. I believe that Ambedkar is the rarest person who was born on this planet. So I want Gubbewad Madam to take over the next contribution given by her. Thank you very much. Thank you, Sunil. With the permission of the chair, can I start with my expression of opinion regarding the chapters and the topics that we covered? Yes, please. Yes, please, madam. Yeah. Please go ahead. Okay. I'm very thankful to this SRM University Delhi, who has given me an opportunity to read out on Ambedkar as an economist, because I was well versed with and had an idea that Ambedkar was a social reformer and who has fought for the equality, fraternity, and dignity. But I was not so aware that even he was a prominent economist. But the contents of your brochure made me to look after that aspect. And when I started to study, then I realized what a wonderful economist the Ambedkar was. And we have forgotten this phase of Ambedkar, which has to be studied and which has to be implemented in present policies and present form of legislations. When I read the statement of this Ambedkar, he says that history shows that the ethics and economics come in conflict, and it is always the that is economic that is taking its prominent role than the ethics. Yeah, he realized it. What is the importance of economics
that is how we can understand by his statement that is made now. And I would like to cover that what actually in view of economic democracy means in the idea of Dr. Ambedkar, and how he has implemented this economic democracy in the provisions of the constitution, and also some principles like consensus democracy, inclusive method, and also the canon principles, and the agriculture sectors in where we are using the policies like MSME, and also the national investment and manufacturing zones. So when I read all these things, I came to know that whatever the things that we are introducing in our policies today as a need of the hour was already stated, and it was mentioned in the ideas of Dr. B.R. Ambedkar. So first I would like to read the definition of economic that is a definition of democracy that has been put forth by the Ambedkar, where he says that democracy is not merely a form of a government, it is primarily a mode of associate living, of conjoint communicated experience. It is essentially an attitude of respect and relevance towards the fellow man. So this itself shows that what the principles that he needs with the concept of democracy. And one thing we have to remember, that good governance depends always on liberty, fraternity, and equality. So all these are the essential principles which has been ensured by him under the provisions of the Constitution. So when we read the part 3 of the Constitution, that is fundamental rights, and that part 4, that is the directive principles of the state policy, then he has managed how the individual liberty, individual freedom, and individual equality has to be balanced with the state interest and with the state monopoly, and with also the public interest. So this is one thing that I understood by the ideology of economic thought of B.R. Ambedkar. And the next one I would like to say that is consensus democracy principle, which has been ensured by the Ambedkar, which says that the equal participation of the members is essential for decision making, even in taking the financial decisions of the country by the Financial Commission. And also the inclusive inclusive method that is expressed by the Ambedkar, which says that equal participation from the marginal community of the people is also very essential. Here I would like to suggest that in the present system, we are thinking, and the government is also focusing on the indigenous knowledge, that is the traditional knowledge, where this traditional knowledge given by Adivasi people and the people who this knowledge, how it is gaining importance not only for the economic development of the country, but also with respect to the sustainability that we are facing with the environmental global problem. So this idea of inclusive method, which was already put forth by the Ambedkar in his idea of economic thought, has been already mentioned in this concept of inclusive method, which we are adopting in the present policy. Similarly, I would like to highlight on the articles which have been mentioned under the directive principles of the state policies, that is Article 38, Article 39, Article 41, and Article 42, which also speaks about that democratical form of government is not only based on the political decisions, it should be based on social and economic equal participation. So if the socialistic justice and economic justice are balanced, automatically the political justice is taken care, and overall we can have a development of a nation. So this idea that can be seen in the directive principles of the state policy. So I would like to say that, so he has spoken about the social security under Article 41 and also under Article 42. So under Article 41, the unemployment people, the sick people, the children, the women has to be taken care when they are not treated equally under the social equality status. And it is the bounden duty of the state to make a
necessary policies or the provisions which may help in the maintenance of the equality and take caring of these unequal strata of the people who are also the part of the nation. And similarly, with labor things, which I would like to come is that the state has framed many laws relating to labor working community. And labor working community has an equal participation in the economic development of the nation. So this we can find, as already one of the panelists has mentioned, that this is provided only in the organized sectors, taken care in the organized sector, but this is not so in cases of unorganized sector. And there is a gap because we are now in the state of liberalization, privatization, and globalization. And one thing what Ambedkar has stated has to be cleanly noted here, that the interest, public interest, the state monopoly has to be balanced. When we are speaking about the liberalization, okay, but privatization and globalization, sometimes it may leads to concentrating of the power with a few hands, where again it may lead for an inequality, and this inequality may lead for inequality in the economic status. And the side effects of this inequality with respect to the economic field, with respect to the private sector, and the lacuna with the social security with respect to the economic condition in the private sectors are the problems that is faced by the individual citizens in the country, where the state has to take care of this. And we need to have some policies and some norms to be framed for taking care of these lacunas which are existing with the unorganized sector. So in unorganized sector, we don't find any difference between men, women, or the difference is based on any caste and category, because all are treated equally under that sector, which is not a positive in nature, but it is somewhat a negative in nature. And this is another drawback that we can see in the present system, where the ideas of economic thoughts in the inclusive method has to be taken care as it is stated by the Dr. Ambedkar. And lastly, I would like to say that we know that the Indian country is entirely based on the agriculture as its main occupation, where our GDP also depends on it. And Ambedkar was known that this is not going to help the economic condition and the employmentability of the people. And for that, he has made tremendous changes in the land reforms, and also concentrated that how the people's care has to be taken with respect to the agriculture sector and their employment sector. When agriculture sector has failed in fulfilling the condition of employment sector, he has given rise that the alternative should be in the form of industrial development. And under the industrial development, again, he speaks about the socialistic principle, where he says that the right of ownership has to be in the hands of the state, and that is the production and the distribution should be entire under the supervision of the state, and where that has to be balanced on the principle of federal financing, or on the principle of federalism that has been adopted under the constitution, and that care has to be taken. So with regard to this, we have the many schemes which I have spoken about, that MSME entrepreneurs, and also the national investment and manufacturing zones, which help in the that is how the industrial small scale industries and agriculture's cottages can compete and develop their economic status in competing with the global in the global world or in the global strata. So with this view, I would like to say that that is Ambedkar's view with respect to economic thoughts is very essential to be implemented and adopted with respect to inclusive method, and also with respect to inclusive method, and also with respect to the lacunas that we are facing with in respect of unorganized sectors, and also the economic status of the country. So thank you for giving me an opportunity to share my view on these things.
You're welcome, Professor Renuka. Thank you for your comments. Ritika. Good morning, esteemed chair and all the dear panelists. I'll be covering what are the major findings and what are the lacunas we have found in our paper or the chapter that was related to the economic democracy, which is essential for the social justice. So, how the Dr. Ambedkar has emphasized that as ma'am told that political democracy is very incomplete without the economic democracy. So the economic rights including the land ownership, or it is including the education, employment, or we can say the fair wages, which are very critical in achieving the true equality. And if we talk about the caste as a socio-economic barrier, so the caste system is not only a social evil, but it is also an economic barrier which restricts the like opportunities for the marginalized groups and the participation in the national development. So how Ambedkar viewed caste as a form of an economic slavery that we are discussing. Also, we have highlighted that how the constitutional provisions reflect Ambedkar ideals in the today's articles, that is covering article 15, 16, 17, 38 and 39, and also which were designed to address the inequality and which is promoting the affirmative actions with respect to either the private sectors and ensuring how the social welfare is directly influenced by the Ambedkar's vision. Also, the relevant thought, which is important in the era of the globalization, which resonates with the global movements which we have highlighted, that is the Black Lives Matter, which is showing the universality of his fight against the discrimination, or we can say his call for the dignity of the human beings and also the marginalized people especially. So also highlighting the advocacy of inclusive growth, and as he promoted the inclusive growth of the state socialism, industrialization, and which is now also prevalent in the schemes which ma'am has highlighted, that is the MSME support schemes, also the direct benefit transfer and rural employment programs. So also talking about the emphasis on that, that is how the truth, morality and the education are crucial for the sustainable development in today's era, that is his personal disciplines and the integrity or the commitment towards the social upliftment of the people are presented in the models of the ethical leadership. So he believed that education is a great tool to empower the marginalized community. Also, he referred the theory of the Gabriel Tarde's theory that speaks that how human beings are resonating, or how human beings copy each other's behaviors. So the Ambedkar referred that we cannot fully blame the Manu, that is Manu Smriti, for that, or the Brahmin community for the caste discrimination. So we have highlighted these things in the paper, finding all the major lacunas as well as the gaps which is there in this, also highlighting what is prevalent in the today's era, uh, like influencing his thoughts on our paper. Thank you so much. Thank you, Ms. Ritika, and all the three authors. Thank you for your contribution. My only input would be that if like your area which you have explored is very big expanse. So if you can think about converting it into a two paper, probably one co-authored and one in independent, or maybe two co-authors, that you can think about it, because the areas which Professor Renuka talked about is about MSME, about those sectors. Particularly, there is a council on economic, Dalit Commerce Chamber of Commerce and its functioning and work. So if we can focus on that particular area, it can be a good paper. Professor Renuka, you can think about that as an independent thing, and then one. So I leave it to you. Otherwise, it is a co-authored paper as you have submitted. But this input I had, I thought that I'll give you.
Now we are left with our, the panelists, the last panelist for the day. And I would request Dr. Kusumlata to be on video. She is an accomplished academician and head of the Department of Political Science at DGC Gurugram, affiliated with Gurugram University. And she is also a gold medalist in both her graduation and post-graduation. And she has worked in a number of areas. So over to you, Dr. Kusum, for your inputs and ideas about your work which you have contributed. थैंक यू विजय सर, इतने बेहतरीन इंट्रोडक्शन के लिए आप सभी ऑर्गेनाइजर्स का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इस मंच पर अपने विचार रखने के लिए आमंत्रित किया। जो मेरा पेपर जो मैंने इस बुक चैप्टर में, इस बुक में, एडिटेड बुक में कंट्रीब्यूट किया है, उसका टाइटल है इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एंड सोशल चेंज, और ये चैप्टर सेकेंडरी डाटा के ऊपर बेस्ड है। इसमें जो रिसर्च रिपोर्ट्स हैं, जो गवर्नमेंट डाटा सेट्स हैं, जर्नल हैं, रिसर्च पेपर्स हैं, या पीएचडी जो इस टॉपिक के ऊपर की गई है, उनसे डाटा संकलित करके इस चैप्टर को लिखा गया है। और हम इस चैप्टर के माध्यम से ये जानने का प्रयास करते हैं कि राजनीतिक अधिकार जो संविधान के द्वारा हमारे लिए सुनिश्चित कर दिए गए थे, क्या वो वास्तव में जो अनुसूचित जाति हैं, जनजाति हैं, या सामाजिक रूप से जो वंचित वर्ग हैं, क्या वो उनको वास्तव में मिल पाए हैं या नहीं मिल पाए हैं। कुछ प्रश्नों को केंद्र में रख के हम इसका अध्ययन करेंगे। जैसे डॉक्टर अंबेडकर के लिए आर्थिक लोकतंत्र क्या था, और वर्तमान में जो आर्थिक असमानताएं हैं उसकी क्या स्थिति है भारत में, और जो जातिगत आर्थिक बहिष्करण किया गया है वो किस तरीके से काम करता है, और सरकार ने जो इतनी सारी पॉलिसीज लाई हैं जो इनइक्वालिटीज को कम करने के लिए बनाई गई है, वो किस हद तक सफल हुई है, क्या वो इस गैप को कम कर पा रहे हैं या इस गैप को कहीं और ज्यादा बढ़ा रही हैं। और अंत में हम देखेंगे कि क्या ये जो समावेशी विकास की संकल्पना है, क्या ये नारों तक ही सीमित है या आगे भी इसे बढ़ पाना संभव है। आज जब हम 21वीं सदी की आर्थिक शक्ति बनने की बात करते हैं तो हमें यह भी देखना चाहिए कि क्या यह आर्थिक प्रगति है वो समावेशी है, या जो दलित हैं, आदिवासी हैं, महिलाएं हैं, या जो ग्रामीण समुदाय है वो इस विकास की यात्रा में समभागी हैं या केवल दर्शक बने हुए हैं। तो इस चैप्टर की प्रेजेंटेशन को मैंने मेनली 10 स्लाइड्स में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें सबसे पहले मैंने जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज हैं वो किस तरीके से सोसाइटी में परसिस्ट करती हैं, उसमें मैंने जो गिग इकोनॉमी है वो किस तरीके से असुरक्षित रोजगार, जो बीमा या सुविधाएं जो श्रमिकों को मिलती हैं किस तरीके से उनको काट के समाज से रखती है, और जो लिबरलाइजेशन के जो बेनिफिट्स हैं वो कैसे हायर क्लास तक ही सीमित रहे हैं, जो लोअर क्लास है या जो आपके SC ST वर्ग है उस तक क्यों इसका बेनिफिट नहीं पहुंच पाया। सेकेंड स्लाइड में हमने इसको डिस्कस किया है। उसके बाद हमने जो थर्ड स्लाइड है उसमें हमने ये जानने का प्रयास किया है कि जो डॉक्टर अंबेडकर है उनके लिए जो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है उसका क्या विजन है, उसके क्या क्या एलिमेंट्स हैं। जैसे वो मानते हैं कि जो संपत्ति है उसका न्यायपूर्ण वितरण होना चाहिए, है ना। वो मानते हैं कि सार्वजनिक उद्योग है उनमें राज्यों की भागीदारी होनी चाहिए ताकि मोनोपोली ना हो पाए, ताकि लोगों का शोषण ना हो पाए। उसके बाद जो फोर्थ स्लाइड है, फोर्थ स्लाइड में हमने उसको बांटा है कास्ट और लेबर मार्केट में किस तरीके से डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, और कैसे जो आपके वेजेस है, काम के घंटे हैं, या महिला और पुरुष जो है उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको डिस्कस किया गया है। इसी बीच में मैंने एक स्टडी को भी कोट किया है जिसको जो थोराट और न्यूमैन की स्टडी है, जिसमें उन्होंने 548 जो कंपनी है उनका स्टडी करके ये जानने का प्रयास किया है कि जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर में क्यों जो दलित हैं उनकी जो एक्सेप्टेंस है वो कम क्यों है। और जो फिफ्थ स्लाइड है उसमें हमने फाइनेंशियल सेक्टर और जो आपका डिजिटल डेमोक्रेसी है उसमें ये इंक्लूसिव क्यों नहीं है, जो SC है, ST है या दलित वर्ग है उसको एक्सक्लूड क्यों किया जा रहा है, इसको देखेंगे। और सबसे बाद में हम देखेंगे कि सरकार ने ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं किए हैं इन लोगों को इंक्लूड करने के, इंक्लूसिव डेमोक्रेसी को बनाने के, पर जितनी भी पॉलिसी हैं चाहे वो जेंडर स्पेसिफिक हो चाहे SC ST स्पेसिफिक हो, वो योजनाएं क्यों सफल नहीं हो पाई हैं, वो पॉलिसी गैप क्या है और उनके इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या इश्यूज आते हैं उनको डिस्कस किया गया है। और जो सेवेंथ स्लाइड हमने बनाई है उसमें एजुकेशनल और जो इकोनॉमिक रिप्रेजेंटेशन है उसमें हम कहाँ तक सक्सेसफुल हुए हैं।
हमने एजुकेशन सेक्टर में आप लोगों को रिजर्वेशन दे दिया है, आपको नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है, आपको राजनीति में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण दिया गया है। लेकिन फिर भी क्या रीजन है कि इतने वर्षों के बाद भी हमारी जो विकास में भागीदारी है वो बहुत कम है अन्य वर्गों के मुकाबले। और अंत में हमने जो कम्युनिटी डेवलपमेंट मॉडल है, जो कम्युनिटी है वो मिलके जो काम करती है और वो जो सोसाइटी में एम्पावरमेंट ला सकती है, उस एम्पावरमेंट मॉडल को डिस्कस किया गया है। जैसे कि जिसमें आपके जो कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स होते हैं उसके एक्ट आने के बाद क्या इसमें सुधार हुए हैं उनको डिस्कस किया है। और सबसे लास्ट में हमने कुछ पॉलिसी रिकमेंडेशंस दी हैं कि हमने कैसे जो पॉलिसी है वो बॉटम टू अप अप्रोच होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग एसी रूम्स में बैठ के सारी नीतियां निर्धारित कर देते हैं, ग्राउंड लेवल के लोगों से उनकी समस्याओं को जानने का ही प्रयास नहीं किया जाता है। या जो चुनाव होते हैं, जैसे रिजर्वेशन, आपको पंचायतों में रिजर्वेशन दे दिया गया है, इसमें आपका कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन भी है, सीओबीसी और महिलाओं का भी रिजर्वेशन। लेकिन इसके बावजूद भी उन अधिकारों को मिलने के बावजूद भी उन अधिकारों का प्रयोग किसी और के द्वारा ही किया जाता है। मैं आपको इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल दूंगी, जो बिल्कुल ही मेरे करीब ही है, कोई मेरे कलीग हैं, उनकी जो जो सीट थी वो महिलाओं के लिए आरक्षित थी और वो दलित वर्ग से आते हैं। तो उन्होंने उनकी भाभी के नाम पे इलेक्शन लड़ा जो डायलिसिस पे थी, और पूरी की पूरी पावर का इस्तेमाल है वो कर रहे हैं। तो आप ये समझिए कि जो एक शिक्षित वर्ग में एक अच्छे स्तर पे जो नौकरी कर रहे हैं, अगर वही उस पावर का मिसयूज कर रहे हैं, जिसके नाम से पावर है उसके पास वो पावर जा ही नहीं रही है, तो किस तरीके से हम एक इंक्लूसिव डेमोक्रेसी बना पाएंगे जिसमें जो डिस्पैरिटीज हैं, जो इनइक्वालिटीज हैं, उनको हम खत्म कर पाए। तो मैं वन बाय वन अपने जो भी डेटाज हैं उनके थ्रू आपको आगे विस्तारित करने का प्रयास करूंगी। तो इस जो मेरी प्रेजेंटेशन है उसका स्ट्रक्चर ये रहेगा मेनली। तो हम शुरू करते हैं इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे साथ हैं भारत में दो तरीके की आर्थिक तस्वीरें हैं। एक भारत वो है जिसमें अमीर से अमीर कंपनियां हैं वो पनप रही हैं, आए दिन नए यूनिकॉर्न बन रहे हैं, शेयर बाजार तेजी से बूम कर रहा है, ऊपर जा रहा है, और टेक कंपनियां हैं चकाचौंध वाले इस एरिया में अपनी धाक मचाए हुए हैं। और एक तरफ वो भारत है जहां आदिवासी जंगल और जमीन से बेदखल हो रहा है, दलित युवा बेरोजगारी से जूझ रहा है, और महिलाएं अब भी वित्तीय स्वतंत्रता के लिए जूझ रही हैं, किसान आत्महत्या कर रहा है। मैं आपको ऑक्सफैम इंडिया रिपोर्ट का एक डाटा बताना चाहूंगी, जिसमें शीर्ष 10% जो आबादी है भारत की, उसके पास 77% आपकी संपत्ति का होल्ड है, और केवल 5% जो जो केवल देश के 5 अरबपति हैं उनकी संपत्ति देश के 70 करोड़ गरीबों की संपत्ति के इक्विवेलेंट है। तो ऐसे में इस आर्थिक विषमता का केवल दायरा आर्थिक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, ये सामाजिक विषमता को भी। सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? Yes, go ahead, Kusum. Yes, madam, we can hear you. तो यह विषमता केवल आर्थिक आंकड़ों तक सीमित नहीं है, इसका सीधा संबंध सामाजिक बहिष्करण से भी है। एग्जाम्पल के लिए, जब कोई दलित छात्र आईआईटी में प्रवेश भी पा लेता है तो वहां पे जो संस्थागत भेदभाव होते हैं या उनका शोषण होता है, उसके जरिए उन्हें बाहर कर दिया जाता है या इस हद तक प्रताड़ित किया जाता है कि वो आत्महत्या कर लेते हैं। आप रोहित वेमुला का केस अभी तक नहीं भूले होंगे। और जैसे आप अगर एग्जाम्पल लें, जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसीज को एलपीजी रिफॉर्म्स हम बोलते हैं, 1991 में इसका सबसे ज्यादा जो बेनिफिट हुआ है वो पूंजीपति वर्ग को हुआ है, जो पहले से शिक्षित थे, जिसके पास पहले से संपत्ति थी और पहले से जो नेटवर्क में थे। तो और उसके जबकि जो वंचित वर्ग है ऐतिहासिक रूप से वो जरूरतमंद था और उसको नए बाजार में टिकने के लिए इस समर्थन की और पूंजी की आवश्यकता थी, इसलिए वो पहले ही कहीं हाशिए तक ला दिए गए हैं। फिर बात करते हैं हम आज की गिग इकोनॉमी की, जो अस्थायी मजदूरी को और सामाजिक असुरक्षा का दायरा है उसको बढ़ाए जा रही है। आप सभी लोगों ने जोमैटो, स्विगी, ओला, उबर जैसी कंपनियों का, प्लेटफॉर्म्स का नाम सुना होगा। क्या उनमें सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम वेतन या जो बीमा जैसे सम्मानजनक काम करने के अधिकार हैं, क्या वो उसमें इन्वॉल्व हैं? जब हम गहराई से देखते हैं तो हम पाते हैं कि बड़ी संख्या में इसमें एससी एसटी जो युवक हैं वही इन असुरक्षित नौकरियों में लगे हुए हैं, और बिना स्थायी अनुबंध के, बीमा के और पेंशन के ये आर्थिक असुरक्षा का दायरा है और गहरा हो रहा है। तो इससे जो इकोनॉमिक
जो डिस्पैरिटीज हैं, जो इनइक्वालिटीज हैं, वो उसकी खाई और ज्यादा गहरी होती जा रही है। और अगर अंबेडकर जी जो है वो बार बार जमीन और संपत्ति के स्वामित्व को आर्थिक लोकतंत्र की रीढ़ मानते हैं, और वो कहते हैं कि जब तक उनके पास जमीनों के ऊपर जब तक पूंजीपतियों का या जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनका कब्जा रहेगा, तब तक इक्वेलिटी नहीं लाई जा सकती। और मेयर पॉलिटिकल राइट ये इंश्योर नहीं करते हैं कि हेल्दी डेमोक्रेसी है। तो उसके लिए हमें आर्थिक जो क्षेत्र है उसमें भी इक्वेलिटी लानी होगी। और जैसा कि डॉक्टर स्नेहा मैम ने पहले किया था, पहले डाटा के थ्रू हमें ये बताने का प्रयास किया कि 58% दलितों के पास तो भूमि ही नहीं है। तो जो भूमिहीन व्यक्ति है उनकी ज्यादा वॉइस है वो ज्यादा दूर तक नहीं पहुंच पाती है। फिर हम बात करते हैं कि जो SC ST युवा हैं, जो IIT IIM या UPSC जैसी संस्थाओं में बहुत मेहनत करके भी प्रवेश पा जाते हैं, लेकिन जब आप कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करते हैं तो इनका रिप्रेजेंटेशन मात्र 2%। तो ये भी हमारे समाज को एक इक्वेलिटी की लेयर तक पहुंचने से रोकता है। अगर हमें सोसाइटी में वास्तव में इक्वेलिटी लानी है तो सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में रिजर्वेशन को प्रमोट करने की बात नहीं है, बल्कि कॉर्पोरेट सेक्टर में भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने की बात है। जो CSR फंड होता है उसका प्रयोग इन युवाओं को, इन लोगों को जो हाशिए पर बैठे हुए हैं, इनके प्रशिक्षण में, इनके स्किल एनहेंस में अगर किया जाए तो इन लोगों को लोअर स्टार्टा से उठा के अपर क्लास में लाया जा सकता है और इस खाई को काटा जा सकता है। अब बात करते हैं कि जो BR अम्बेडकर थे उनके लिए आर्थिक लोकतंत्र है उसके क्या मायने थे। तो उनका मानना था कि संपत्ति है उसका न्यायपूर्ण तरीके से वितरण किया जाए, और यही कारण था कि उन्होंने जो लैंड रिफॉर्म्स है उसमें काफी बेहतरीन काम किया। और जो सार्वजनिक उद्यम है उसमें उसने राज्य की जो भागीदारी है उसको सुनिश्चित करने की बात की कि अगर पूंजीपतियों के हाथ में ही सारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज का कंट्रोल आ जाता है तो ऐसे में लोगों को, जो गरीब वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, उसको शोषण के लिए मजबूर किया जाएगा और आप उन्हें बचा नहीं पाएंगे। इसलिए वो कुछ उद्यमों को सरकार के नियंत्रण में रखने की बात करते हैं। और उन्होंने भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन के लिए भी जो काम किया है वो सराहनीय काम है। जो भारत में जब श्रम आधारित जो हम मेरिटोक्रेसी की बात करते हैं कि हमारे यहाँ पे जो भी रिक्रूटमेंट होती है वो मेरिट के आधार पे होती है, लेकिन आप देखेंगे कि इसमें कास्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो निर्धारित करता है कि किसकी नियुक्ति की जाए और किसकी नियुक्ति ना की जाए। इसके लिए थोराट और न्यूमैन ने 2010 में एक स्टडी की थी और उसमें उन्होंने 548 जो कंपनियां हैं उसमें फर्जी आवेदनों के माध्यम से ये जानने का प्रयास किया। उन्होंने 3 जो कास्ट हैं उनके सरनेम का इस्तेमाल करते हुए उन कंपनियों में फर्जी आवेदन किए, और फिर उन्होंने पाया कि सिर्फ जो हायर क्लास के नाम से जो आवेदन किए गए थे उनको 67% ज्यादा रिस्पॉन्सेज मिले। तो आप इससे ये पता चलता है कि जो लोग लोअर स्टार्टा से आते हैं उन्हें केवल पद तक पहुंचने के बाद ही डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं करना पड़ता, बल्कि उस प्रक्रिया से गुजरने के दौरान भी उन्हें बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो फेस करनी पड़ती हैं। फिर अब हम जो आपका निजी क्षेत्र है, जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, उसमें अगर हम विशेष रूप से टेक, हेल्थ और शिक्षा क्षेत्र है, उन क्षेत्र में रोजगार का बहुत बड़ा हिस्सा है, आज लोगों को रोजगार देता है। लेकिन क्योंकि इनकी जवाबदेही सुनिश्चित नहीं है इसलिए ये लोगों का शोषण करते हैं। लोग एयर कंडीशनर रूम में बैठ के लोगों को 72 घंटे काम करने की हिदायत दे देते हैं, लेकिन उनकी वर्किंग कंडीशंस के ऊपर फोकस नहीं करते हैं। तो हमें कॉर्पोरेट सेक्टर में इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई आरक्षण नीति नहीं है, यहाँ पे कोई सामाजिक जवाबदेही नहीं है, और यहाँ पे SC ST की जो भूमिका है वो बिल्कुल नगण्य है। तो हमें इसको फिक्स करने की जरूरत है। हमें आज लोगों को वित्तीय रूप से समावेशित करने की जरूरत है। आज आप लोगों को एजुकेशन तो दे रहे हैं, लेकिन उस एजुकेशन के साथ साथ फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं दे रहे। अगर मैं पैसा कमा रही हूँ तो मुझे उस पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना है, उसको कैसे ग्रो करना है, इसकी नॉलेज मुझे स्कूल या कॉलेजेस में नहीं दी जाएगी। वो तभी मुझे मिलेगी जब मैं अर्न करने लग जाऊंगी और उस बड़े सर्कल में चली जाऊंगी। तो ये फाइनेंशियल एक्सक्लूजन जो सोसाइटी में महिलाओं का या जो SC ST क्लास से आने वाले लोग हैं उनका किया जा रहा है, इसको दूर करने के लिए ऐसा नहीं है कि सरकार ने योजनाएं नहीं चलाई। सरकार के द्वारा
इसके लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई गई हैं, जैसा कि इसने हमने भी पहले कहा कि सारी योजनाओं का आवास योजनाएं हैं, या SC/ST स्कॉलरशिप योजनाएं हैं, या अम्बेडकर मेरिट स्कॉलरशिप है। इस तरीके की बहुत सारी योजनाएं हैं जो इन लोगों को समर्थन देने के लिए चलाई गई हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम उस चीज तक क्यों नहीं पहुंच पाए हैं कि आज हमें बहुत ज्यादा एंटरप्रेन्योर हैं, वो इस कैटेगरी से देखने के लिए क्यों नहीं मिलते हैं? तो उसका एकमात्र रीजन ये है कि इन लोगों के पास ना तो जमीनें हैं, तो जब ये सरकार की किसी योजना के तहत लोन के लिए आवेदन करते हैं तो इनके पास कोलेटरल नहीं होती। दूसरा, जब आप बैंकिंग अधिकारी से संपर्क साधने का प्रयास करते हैं तो वो भी आपको बहुत अच्छी नजरों से नहीं देखते हैं, क्योंकि वो भी उसी समाज की कास्ट की कैटेगरी से आते हैं और उनके वो बायसेस हैं, वो अभी तक पढ़े लिखे होने के बावजूद खत्म नहीं हुए हैं। और फिर इन लोगों के पास ना सरकारी योजनाओं की उतनी अच्छी जानकारी नहीं होती है, क्योंकि सुदूर जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पे इंटरनेट और मोबाइल की पहुंच अभी भी कोसों दूर है। अभी भी हमारी बहुत बड़ी पॉपुलेशन है वो डिजिटलाइजेशन से दूर है। तो इस डिजिटल डिवाइड को दूर करने के लिए गवर्नमेंट को जो IT है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ सेक्टर है, इन पे और ज्यादा इन्वेस्ट करना होगा ताकि ये चीजें लोगों के लिए सुनिश्चित की जा सके। अब जैसे मैंने आपको बताया कि डॉक्टर अंबेडकर ने अन्याय को दूर करने के लिए राजनीतिक क्षेत्र में, शैक्षिक क्षेत्र में या नौकरी में आरक्षण की मांग की थी, और ये आरक्षण उन्होंने आर्टिकल 15, 16, 330, 332, 335 के प्रावधानों के तहत SC/ST के लिए लागू भी करा दिया। लेकिन सरकार ने बहुत सारी ऐसी योजनाएं भी चलाई हैं जो प्रमुख रूप से SC और ST वर्ग के लोगों के लिए ही हैं। बजटिंग का प्रावधान सिर्फ उन्हीं के लिए ही किया जाता है, लेकिन स्टिल वो इतना पीछे क्यों है? क्योंकि मैं आपको कुछ सरकारी योजनाओं का नाम बताना चाहूंगी। जैसे SC/ST एक शेड्यूल कास्ट सब प्लान होता है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के बजट का एक निश्चित हिस्सा है वो अनुसूचित जातियों के लिए ही रिजर्व किया गया है। और जो TSP है, ट्राइबल सब प्लान जिसे बोलते हैं, वो भी अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए दिया गया बजट का एक निश्चित हिस्सा होता है। इसी तरीके से स्टैंड अप इंडिया है, इसमें SC/ST महिलाओं के लिए हम 10 लाख से 1 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान करते हैं। लेकिन इसके मार्ग में आने वाले जो स्ट्रक्चरल बाधाएं हैं, हम उनको दूर नहीं कर पा रहे हैं। उसकी क्या सीमाएं हैं? तो सबसे पहले जो कैग की रिपोर्ट है वो ये बताती है कि जो SC/ST के तहत जो भी राज्य हैं वो 60 से 70% बजट ही खर्च कर पाते हैं, बाकी बजट है वो अन्य योजनाओं में मर्ज कर दिया जाता है। तो इसके लिए जो भी बजट सरकार चाह रही है, इनिशिएट कर रही है कि इसको लोगों तक पहुंचाया जाए, उनकी समस्याएं दूर की जाए, वो पूरे तरीके से खर्च ही नहीं हो पा रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में स्ट्रक्चरल खामियां हैं जो ऐसा करने से रोकती हैं। हमें उन बाधाओं को दूर करने की जरूरत है। फिर जब हम बात करते हैं कि अगर हम न्याय की भी गुहार लगाएं, तो हाई कोर्टों में, सुप्रीम कोर्टों में जो SC/ST वर्ग है उसका बहुत कम रिप्रेजेंटेशन है, उनकी संख्या बेहद कम है। और जहां तक हम बात करते हैं कि ये आवास योजनाओं के माध्यम से SC/ST वर्ग को भूखंड दिए जाते हैं ताकि वो अपना आवास सुनिश्चित कर पाए। तो इसमें भी मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दूंगी कि कैसे इसका मिसयूज किया जा रहा है। गुड़गांव जैसे एरिया में हर बिल्डर को जब वो बिल्डिंग्स बनाते हैं तो उनको एक पर्टिकुलर सेगमेंट है वो BPL फैमिलीज के लिए बनाना होता है। तो उसमें लोग हैं वो 100 लोगों के BPL कार्ड हैं वो अपने पास मंगा लेते हैं, उनके गूठे दस्तक करा लेते हैं, और उन्हीं प्लॉट को जिनको बेचा नहीं जा सकता है उसको रेंट आउट किसी और को कर देते हैं। वो 2 लाख रुपए की जो प्रॉपर्टी है उसको 15-16 लाख में भी बेचा जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के एफर्ट्स या योजनाओं में कोई कमी है, पर उनके लूप होल्स इतने ढूंढ लिए गए हैं कि उनको डील करने के लिए और सख्त नियमों की और सख्त कानूनों की जरूरत है। तो अंत में मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि जो प्लान बेस्ड बजटिंग है उसके लीगल ढांचे को सुनिश्चित किए जाने की जरूरत है, और जो SC/ST वर्ग के लिए जो स्पेशल लाभार्थी ट्रैकिंग सिस्टम है वो बनाया जाना चाहिए, और जो पब्लिक ग्रीवेंस सेल है उसमें जो कास्ट बेस्ड रिपोर्टिंग है उसके लिए उनको प्रशिक्षित किया जाए ताकि उनको जो भी योजनाओं का लाभ पहुंचा है उसकी रियल टाइम में ट्रैकिंग की जा सके। यही मेरे इस चैप्टर पर विचार थे। आप सभी इसके लिए आगे जो मुझसे क्वेश्चन करना चाहें आप सब इनवाइट हैं। थैंक यू डॉक्टर कुसुम। बहुत ही आपने तरीके से, स्ट्रक्चर्ड तरीके से चीज़ों को बताया है, और धन्यवाद आपका फॉर इन्फॉर्मिंग
us about your chapter. और जो चीजें आपने कवर करी हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द बुक. डेफिनेटली आपने प्रैक्टिकल डायमेंशंस को कवर किया है और आपके जो सजेशंस आपने 2-3 दिए हैं वो सजेशंस एलाबोरेटेड डेफिनेटली होंगे आपके चैप्टर में, तो वो इट विल बी अ गुड कंट्रीब्यूशन फॉर द बुक. सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड to that. I am yet to edit and review that particular paper. So once I have it, then we will provide you with the editorial comments. Thank you for your input. Now, Thank you, sir. I think we are already 1.5 hours into the session, and I think our participants have joined today. Is a holiday as well, but we will take one round of discussion again, and anyone who wants to supplement or add any input to it can do so. So we will begin with Ravi Prakash, Advocate Ravi Prakash. So I'm sorry I stopped you in between when you were speaking. We wanted to cover everyone in one rotation, and then we wanted to give a second round of chance to the participants so that they can speak. The participants, I would request, if you have any questions or you want any specific question on a specific author, you can use the chat box to put that particular question. So kindly use your chat box and you can put across any question you have specifically to a specific author, or generally you have a discussion or you want to make some point, you are welcome. So over to you, Advocate Ravi Prakash. Thank you, sir. In fact, because the topics which were presented and the chapters which have been discussed, the draft chapters which has been discussed by the several co-panelists, they are amazing. In fact, they are taking the research work from the ground zero, and how it is being implemented and how it is being done. However, my chapter and my focus is on purely legal aspect, the interpretation of the constitutional provisions, and looking. So I think that I may not be able to supplement it through the ground implementation, rather than the one of the core issue which I am even thinking upon, that what happens to the recommendations of Finance Commission, which is a constitutional body, and how to what extent it is being implemented by the successive government. Is it like there are only few commissions which are constitutional bodies, like Election Commission of India, Finance Commission of India. Now the GST Council is also a constitutional body. Its recommendations, the GST. So however, it will be very the GST Council is still a work in progress. As far as the taxation and the balancing of the fiscal federal principles are concerned. Nevertheless, the Finance Commission has existed since beginning, that is 1950. So I'm also going to explore in my chapter the recommendations of the Finance Commission vis-a-vis the borrowing FRBM Act, as well as the principles which is there inherent in Article 293, but has not been explicitly laid down by any of the authority which are responsible to interpret the Constitution. When I say any of the authority, it may be the executive also, which may lay down the principles to interpret that how they are going to. So executive in the sense, the Supreme Court may approve that interpretation or may disagree with the interpretation given by the executive, or the legislature may say that this principle is violative of basic structure doctrine or something, or the higher grand norm principles which are emanating from the constitutional identity. So when I say so, I'm going to examine the entire gamut of the developments, the historical aspects of it, and how it is though it does not, it looks like that it is not going to reshape or shape the societal structure, or may not have the implication on the social development, but yes,
it is one of the principles which may impact the state's social development, because it is going to restrict or allow the leverage of the states to generate the finance under Article 293 by virtue of Article 293 of the Constitution of India. So that is one of the though I think as Professor Vijay indicated, that the few chapters they have the organizers have received already, but I think I joined this the August body of contribute as a contributing author very late, and my propositions are still in very formative stage. Yeah. Nevertheless, I'm working hard. I think I will be able to justify that subject matter and the topic, and I have an interest because of the ongoing pending cases before the Supreme Court of India, which I am handling. So I will be presenting my research, which I think will be appreciated by everyone. Thank you. Thank you, Ravi, for that particular input. In fact, I would like to tell the authors that we have got your papers. We will, again, you have got some time to review it. If you want to add something, you can include something that is possible. Because my intention is to, release the published book on Mahaparinirvan Divas, that is the death anniversary of Dr. Ambedkar. So that is how the, things we planned. We wanted to have abstract and initial discussions on April 14th, which is the birth anniversary. And I wanted to release this particular book on 70th death anniversary of Dr. Ambedkar, which happens on 6th of December, 2025. So that is the idea. So we have time. So in which we can definitely discuss, and I want to close this thing by maybe end of May. Everything I want to send it to publisher, because they will also take their own time to come up with the book. So this is what is the overall plan of this. I have reached out. So you are still in an advanced stage, because I have reached out to a couple of authors today itself, because when I look at the scheme of the book, I want to cover every thought of Dr. Ambedkar, which he has propounded or worked upon. And that is why I was talking to Professor Gubbewad to, write something in the area of labor reforms. If you see, Dr. Ambedkar has talked about the problem of a rupee. He has talked about public finance and taxation. He has talked about economic development, agricultural productivity. He spoke about industrialization, social justice. So varied areas he has talked about when we talk about economics and Dr. Ambedkar's contribution. In fact, if we look, some of the contributions of Dr. Ambedkar in terms of the writing, it is very, very prominent. Like the major economic publications of Dr. Ambedkar would be The Problem of a Rupee, Its Origin and Its Solution. So that is very interesting. Then you have The Evolution of Provincial Finance in British India, a study in the provincial decentralization of imperial finance. This would be a good historical background, Ravi, if you have a look at this, because this will give you the background from which the things have emanated in the constitution. Similarly, if we see, there are work like one paper in 1918 he wrote on small holdings in India and their remedies, and in the Journal of Indian Economic Society. Other than that, his MA thesis is of prominence on administration and finance of the East India Company. And it is quite a historical information that how East India Company used to manage the finances for us. So I believe we forget history. And I remember my son's quote. He never likes history. He says that why we are studying these particular things. I say that you come to know that where you are standing, why you are standing, and what is the backdrop, because then only you will be able to appreciate the present. If you don't see the past, you will not be able to appreciate the present, the days which we lived in and which you are living in. So these are the inputs or ideas which will be thrashed through in this particular book. I think there is one question. Yes, the question. I think you have read that. Ravi, you can address that, please. And I would also request all the participants, if they can be on the video, we want to take a group photograph of the people who could sustain us for 1.5 hours. So that is the we want to put it on social media. So everybody whosoever is willing to be on photo can open their video. And Ravi, you can answer the question.
Yes, and the recent judgment of the Tamil Nadu, it is with reference to the recent judgment given by the Supreme Court and what is going on with reference to the passing of bill and the veto pocket veto being exercised by the governors, but respectively as an agent of central government. Uh, so the judgment is very interesting. It's the beginning of opening of Pandora's box, and though I think I have an opinion that the Supreme Court should have exercised its restraint, because it's the politics which reshape and get shaped in such discourse, and particularly the direction what was not even remotely written or by way of given interpretation, it could not have been interpreted in this manner, particularly the timelines, the 3 months. And they are quoting and referring to the Article 1, Clause 7 of the US Constitution, where the president has no option rather than when the bill is being passed by both the houses of the US Congress, and the president has no option rather than to give its assent within 10 days and the deeming fiction which it incorporates. But look at the, as I see as an originalist interpretation of the Constitution, it was written there way back in original Constitution of United States that within 10 days the president has to give in such and such scenario, has give assent. In the Indian Constitution and the drafters of Indian Constitution had all the experience, were aware about the 10 days limitation, which the US Constitution explicitly provided, but still chooses not to incorporate it. There has to be some logic. There has to, and the background goes because that's why the institution of governor becomes important. It's important because of the time, the princely estates which were supposed to be incorporated in India and integrated in India. The governor were a key player in the integration of India as per the scheme of the Constitution. So the framing of timeline by the Supreme Court, as per my very personal opinion, is unjustified. It cannot be done in exercise of power of judicial review. It's something because for everything, then the center, the Supreme Court, it will be something. Every state will be where the BJP is not being ruling. Every state will be knocking the door of the Supreme Court that yes, please help us. Yes, it needs to be helped in certain situations where the Constitution permits, where the Constitution authorizes, where the Constitution at least has a foresight that yes, this needs to be done. It cannot be something, or it relates to the violation of constitutional identity. Here, the Supreme Court in its judgment has not even highlighted that what principle or the what basic principle or the what constitutional identity is impinging upon, and why it is justified in invoking the power of Article 142 to pass the bill or attach a deeming fiction and enact it as a legislation. So yes, that's my initial thought. I'm still reading the judgment. It's a very lengthy judgment, but it should be referred to the larger bench for an authoritative interpretation. That's my opinion, prima facie. It cannot be done by the division bench judgment, because there are so many judgments of the larger bench which runs counter to the propositions which it lays down. That's my prima facie opinion. Thank you. Thank you, Ravi, for that particular input and answer. I think there are no more questions which are there in the panel, and I believe people would be preparing for a holiday lunch today on Dr. Ambedkar Jayanti, so we should not delay them for that. So I will like to thank everyone who have contributed for this particular chapters. Particularly my students also who have joined in today to attend this particular event, and they are curious enough to sacrifice their holiday 2 hours to listen to the thoughts of the authors on Dr. Ambedkar Jayanti.
And I must say, any scholar of law has to read Ambedkar, because his ideas, his objectives, his philosophy of the Constitution is reflected there, and we are all interpreting that what he has said. You know, Dr. Ambedkar said that cultivation of mind should be the ultimate aim of human existence. And this cultivation of mind can only happen when we engage, when we discuss, when we bring forth the things. So his ideas, he was not very static about his ideas. He was always, reforming in his ideas. So he has changed his ideas also over the period when he looked at the dimensions, how it is working. And he was a very rational thinker. That is very important, because everything, the basics of law is rational thinking. You need to question things. You need to ask why that particular thing is there. What is the objective of having a particular thing? To end the session today, I would again quote Dr. Ambedkar, who said, "Men are mortal, so are ideas. An idea needs propagation as much as plant needs watering. Otherwise, both will wither and die." So with this particular quote, I, implore upon each one of you to keep, watering your ideas so that it grows into a tree, either into a paper of a book chapter or into a paper of a journal. So looking forward to more contributions from you all in different areas and aspects, and let the economic thinking of Dr. Ambedkar also prosper. I look forward to this book as a great contribution. So with this, thank you everyone, and it was a pleasure having you for this particular panel. Thank you. Thanks a lot. SRM University extends a warm thank you to all of you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Yes, Thank you. sir.